Hello students, in this video we are going to study the poem The Laburnum Top from our book Hornbill. The poem The Laburnum Top is written by Ted Hughes. It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. The tree is yellow, silent and death-like and is made alive by the bird and her young ones. The yellow bird has her shelter on the tree, which she feeds her young ones. But as soon as the bird leaves to fly in the sky, the tree becomes silent and death-like again. Now the poem is like this. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So first of all, a laburnum is a tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seed. Now in the above lines, the poet says that he saw a laburnum tree whose leaves were yellow. The tree's top is still and silent in the daytime of September month. It is autumn season and all the seeds of the tree had fallen. The poet has used the word yellow for leaves and sunlight. Yellow symbolizes silence, death and beauty. He describes the whole scene of the tree with this color. येलो कहने का मतलब येलो जो है वो रिप्रेजेंट करता है साइलेंस को, डेथ को, और येलो इज़ वेरी अ ब्यूटीफुल कलर. सो ये वर्ड येलो यूज़ करके पोएट ने काफ़ी कुछ यहाँ पे सिंबलाइज कर दिया है कि ये एक ऑटम सीजन है और सब कुछ बड़ा ही शांत है. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup and suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine start up of chitterlings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrill. Now यहाँ word एक goldfinch bird, जनरली वो एक सिंगिंग बर्ड होती है और उसके येलो कलर्स के फीदर्स और विंग्स होते हैं. A goldfinch bird comes to the end to end the death-like scene of the tree and makes a sudden chirrup sound. The bird, while being rapid, alert and precautious like a lizard, sit on the branch of the tree. As you have seen, birds जो होती हैं वो काफ़ी क्विक मूव करती हैं और काफ़ी प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ती हैं. तो जब बर्ड ट्री पे लैंड करती है तो वो काफ़ी अलर्ट मूड में है, काफ़ी क्विक है, और जैसे एक लीजर्ड अपने आप को बचाने के लिए अलर्ट मोड में रहती है, कुछ उस टाइप से हमारी गोल्डफिंच भी है जब वो ब्रांच पे बैठती है. As she moved towards the thickness of the branch, her younger one started chirping and doing vibration with wings. नाउ जो बर्ड है पहले वो आउटर सरफेस पे रहती है, नाउ धीरे धीरे वो अंदर की तरफ मूव करती है जहाँ उसके घोंसले हैं, और विद द मूवमेंट ऑफ हर टुवर्ड्स द नेस्ट उसके यंग वंस को उसके आने का पता चल जाता है, उसके बच्चों को पता चल जाता है. एंड दे स्टार्ट चिरपिंग, और वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं और मेकिंग अ साउंड लाइक मशीन, और वो कुछ मशीन जैसा साउंड वहाँ से निकलता है ना. यहाँ मशीन कहने से एक और भी मतलब है कि बिफोर कमिंग ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड सब कुछ बड़ा साइलेंट मोड में था, बट जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड वहाँ एंटर करती है, अब मशीन जो है वो साउंड का स्टार्ट हो जाता है. सो यहाँ पे गोल्डफिंच को मशीन बोला गया है जो इस डेथ साइलेंस को ब्रेक करने वाली है. Because the movement of the bird and her young ones, the tree starts to shake and thrill. अभी तक जो पेड़ डेड जैसा लग रहा था, गोल्डफिंच के आने के साथ
वो जो साउंड स्टार्ट हुआ, विद दैट ट्री भी क्या करता है, अपने आप को शेक करता है, विथ थ्रिल, एक्साइटमेंट में अपने आप को वो भी शेक करना चालू करता है. द पोएट हैज गिवन टू अपोजिट सिनेरियोज ऑफ द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्ड एंड हर यंग वंस. यहाँ दो चीजें हैं, बर्ड के आने से पहले का और बर्ड के आने से पहले का सीन और बर्ड के आने के बाद का सीन. आने से पहले एवरीथिंग वाज साइलेंट लाइक डेथ, और आने के बाद एवरीथिंग वाज अलाइव, सब कुछ जिंदा हो जाता है, एक सिस्टम चालू हो जाता है, दैट इज लाइक अ मशीन. The laburnum tree and the goldfinch bird is the engine of her family. It is the engine of her family. Goldfinch को उस family का engine कहा गया है. She provides food to her young ones and moves to the other branch end. Her dark-colored striped face is visible as her body is yellow-colored and hides behind the yellowish leaf of the tree. Now, goldfinch bird को after feeding the young ones, she moves out of the nest or out of the tree, and in the process उसके जो फेस पे ब्लैक कलर का मास्क है, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, वो दिखता है, और वो येलो कलर की पेड़ और येलो कलर की उसकी बॉडी होने के बावजूद भी दैट ब्लैक कलर मास्क इज विजिबल. आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच, द बर्ड मेक्स अ स्वीट चिर्पिंग साउंड जस्ट लाइक whispering and flies away towards the infinity sky. It again makes the laburnum tree silent and death-like. Now again वो ब्रांच के एंड पे है and it will take a fly in the sky. वो उड़ने से पहले एक चिर्पिंग साउंड करती है. मे बी वो एक वार्निंग है टू द यंग वंस नाउ नॉट टू मेक नॉइज, एंड आफ्टर दैट शी फ्लाइज अवे इन द स्काई. और उसके जाने के बाद अगेन द लेबोनम ट्री इज जस्ट वेरी साइलेंट एंड डेथ लाइक. उसके जाने के बाद वापस से वो फिर से वही कंडीशन है, सब कुछ वहाँ पे शांत हो जाता है. नाउ लुक एट द समरी ऑफ द पोएम वंस अगेन. द पोएम starts with a description of the laburnum tree whose top was still and silent. Its leaves had turned yellow and seeds had fallen down. It was a daytime in the month of September when the tree was standing still and death-like. The lifeless tree becomes alive by the arrival of the goldfinch bird. She came to feed her young ones who are on the thickness of the branch. The tree is her shelter. She arrives at the end of the branch with the chirping sound. She further moves to the other side of the branch with rapid and precautionary movement like a lizard. As soon as she arrives, her young ones start chirping like a machine and vibrating and flapping their wings. The death-like tree becomes alive and it resembles, trembles and shakes. After feeding them, she flies to the other side of the branch. Her dark-colored face with the yellow body was barely visible as she vanished behind the yellow leaves. She flew away in the sky, leaving the tree death-like again. Now we'll look at some literary devices used in this poem. So here is your first literary device, a September sunlight. Here the initial sound is S. So here it is alliteration. Second one, sleek as lizard. As you know, when we compare the two things with like and as, we call it simile. Now the next one is as she enters the thickness and a machine starts up. So here is a comparison, and this is an implied simile, as we call the sound produced by the goldfinch bird
as a machine started by. So here it is metaphor. It is the engine of our family. Here the goldfinch is employed as the engine, and the showing her beard face identity mask. So again these two are metaphor. The whole tree trembles and thrills. So here a non-living thing is referred as behaving like a human being. So here it is personification. So here we come to the end of this poem. Thank you.